बहुत लोगों को लगता है दैट एआई इज द फ्यूचर, बट ट्रस्ट मी, हम ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पे एआई इज नॉट द फ्यूचर, इट इज ऑलरेडी द प्रेजेंट। तो अक्सर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो से कमेंट में मुझे लोग पूछते हैं कि फाइनेंस में एआई कैसे हेल्प करेगा, या फिर एआई के अंदर कौन सी ऐसी फील्ड्स है जिसको हम कर सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि बहुत जगहों पे ले ऑफ हो रहा है, तो उस ले ऑफ से बचने के लिए हम कौन सी फील्ड में एंटर कर सकते हैं या कौन से स्किल्स सीख सकते हैं जो कि एटलीस्ट 10-20 साल तक तो हमको सिक्योर रखे उस पॉइंट पे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और जो हम जॉब करना चाहते हैं। सो इसी के लिए टुडे आई हैड one podcast episode with a person who has been working with a company that has taught over 20 lakh people AI के अंदर, या आप कह सकते हो टेक बेस्ड कोर्सेज जो भी सारे के सारे होते हैं, बी इट फुल स्टैक डेवलपमेंट, बी इट डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, और मोर देन दैट, ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर कवर्ड बाय देम। और मैंने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जो जनरली लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये ले ऑफ होते क्यों है, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, ऐसी कौन सी फील्ड जिनको हम एंटर कर सकते हैं, एंड इनको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट टू स्पेशली इफ यू आर नॉट फ्रॉम दीज फील्ड्स प्रीवियसली। अगर मैं बिल्कुल बिगिनर हूँ, मुझे दिख रहा है कि यार एआई इज टेकिंग ओवर जॉब्स, तो मैं कैसे घुसूँ उसके अंदर या कैसे मैं उसमें अपना करियर बना सकता हूँ, दैट टू एज आई सेड अगर हम बिल्कुल बिगिनर है। सो आई हैव कवर्ड सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस in that very small 15 to 20 minutes episode. उसको देखना। I'll also put the questions in the description with the time stamp ताकि आप देख पाओ कि यार ये वाला क्वेश्चन तो सबसे मेन है मेरे लिए, मैं पहले ये वाला देखूंगा। I would recommend obviously कि पूरी वीडियो आप देखो, बट अगर आपके पास कम टाइम है then I would recommend कि एटलीस्ट वो वाला पार्ट जरूर देखना, which is super important for you, and वहाँ से आपको बहुत ही इंडस्ट्री रेलेवेंट आपको एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ सिनारियोज मिलने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू वांट मोर सिमिलर पॉडकास्ट, कमेंट कर देना कौन से टॉपिक पे चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू हैव इट फॉर यू। So thank you so much, Kushal, for joining me today. We'll start with one very major problem जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, and I think जब भी मैं कोई important news channel खोलता हूँ, ये किसी ना किसी कंपनी के बारे में आ रखा होता है। A lot of companies are laying off thousands of their workforce. And अब मेरे जो friends हैं जो मेरी एज के हैं, they are just completing their engineering या किसी भी फील्ड में वो है, they are afraid, they are scared कि यार हमने जो पढ़ाई करी है जिस कंपनी में हम ज्वाइन भी कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, they are afraid कि कल को शायद एक रैंडम दिन पे कोई मेल आएगा where we are also laid off. So what do we do in this situation? Why is it happening? How can I as a student like avoid this? So yes, yeah, that is a major problem that I think a lot of people would be thinking about right now. So हुआ क्या है, अगर हम देखें, पहले जब हम कॉलेज से निकले थे या उससे भी पहले, एक अच्छा करियर, एक सेफ करियर, एक स्टेबल करियर बनाने के लिए सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता था कि एक अच्छी बड़ी कंपनी का पार्ट बन जाओ, एंड देन यू कैन मे बी स्पेंड द नेक्स्ट 10, 15, 20 years there in a safe environment. पिछले 2-3-4 सालों में it has become very skill oriented. Yeah. So even with the largest of the companies, अगर आपके पास वो स्किल नहीं है जो आज की डेट में रेलेवेंट है, यहाँ पे redundant स्किल पे काम कर रहे हो, which can be automated very easily, your value in the organization will cease to exist. And I think that is what is happening with most of the large organizations. Be it Google, be it Facebook, Meta, Alphabet, any of those, Microsoft rather, Amazon. Another thing जो मैं देखता हूँ is sometimes the inability of people to acquire newer skill sets when that window is open. Yeah. So a lot of people miss out on that window. And to answer the second part of your question, कि जो बच्चे अभी कॉलेज में हैं, I think that is the most critical part, not just for academia, हमारे लिए भी as industry, and even for us as a whole, as a country, as an economy as well. जो बच्चे वर्कफोर्स में अगले 2 साल में, 3 साल में आने वाले हैं, 1 साल में आने वाले हैं, even it becomes very important that उन्हें पता हो कि वो स्किल्स कौन सी हैं जो एटलीस्ट अगले 15-20 साल तक रेलेवेंट रहने वाली हैं, उनके पास एक्सेस हो उन स्किल्स को सीखने का, एंड इवेंचुअली उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो उन स्किल्स में एम्प्लॉयबिलिटी पाने की. आई थिंक दैट्स समथिंग दैट वी ओ टू सोसाइटी राइट नाउ, एंड वी नीड टू टेक सम वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इंश्योर दैट हैपेंस. एंड जस्ट अ फॉलो अप थिंग आपने मेंशन किया दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसी कौन सी फील्ड्स है right. जो अगले 10, 15, 20 साल तक भी रेलेवेंट right. रहेंगी. राइट. सो लेट्स से कि आई एम अ स्टूडेंट जिसको नहीं पता कि 15, 20 साल तक क्या रहेगा, सो अकॉर्डिंग टू यू कौन सी ऐसी फील्ड जिसमें मैं अपना करियर बनाने का सोच सकता हूँ, कंसीडरिंग कि उसको आने वाला टाइम खत्म ना कर दे. Okay, so if you want to maybe make a career जो kind of future proof हो, देखो nobody's been into the future, but something which we can say with a 95% probability. My thought is, if you look at it from my perspective,
हुआ क्या है पिछले 10 सालों में अगर आप देखोगे, आप डेटा को जब स्टोर करते थे ना, जब आप स्कूल में रहे होंगे या उससे भी जूनियर स्कूल में रहे होंगे, व्हेन आई वाज इन स्कूल, हमें मूवी देखनी होती थी तो हमारे पास होती थी, हमारे पास सीडी होती थी, पेन ड्राइव में होती थी, कंप्यूटर में पड़ी होती थी। हम ट्रिप पे जाते थे, हम एक दूसरे से फोटोज मांगते थे, यार मेरे को फोटोज मेरी पेन ड्राइव में दे दे, मेरे को एक सीडी राइट कर दे, मेरे कंप्यूटर में डाल दे, गाने दे दे मुझे अपनी गाड़ी में प्ले करने के लिए पेन ड्राइव में। That has ceased to exist. Yeah. We moved to ensuring that हमारा सारा डेटा क्लाउड पे है and we are able to access it whenever we want. Yeah. Thus, taking away the redundancy of storage as well. So आपको local site पे read only memory की जरूरत खत्म हो गई है, केवल computational memory, केवल computational capability की जरूरत रह गई है. So cloud से related जितनी भी चीजें हैं वो एटलीस्ट अगले 20 सालों तक बहुत relevant रहने वाली है. Okay. Be it pure play cloud computing or the largest threat that you have in your data is on the cloud, which is of cybersecurity, cloud security. Good fields, a well-trained guy right out of college or girl right out of college can start at around 7.5 lakh rupees, as a cloud computing analyst or a cybersecurity analyst. Now again, जब आपका सारा data cloud पे होता है, it becomes a very good ground to train AI models as well. Because one of the largest inhibitors to be able to train machine learning AI models is to have access to that large amount of data in one place. Cloud helps us do that. So machine learning and artificial intelligence again become very critical backbones of how the next 20 years will look like. Machine learning पे trained अगर कोई professional है, right out of college, first time job seeker, 1 or 2 years of experience, they can expect to have salaries of around 10.5 lakh rupees. अगर कोई machine learning के साथ उसके ऊपर डेटा को superimpose करके artificial intelligence भी कैसे बनानी है, उस level तक जा पाता है, that person can very easily command a salary of around 12.5 lakh rupees starting. And again, for all these technologies, sky is the limit. Yeah. As I was mentioning, cloud पे क्योंकि आपका डेटा है, उसे एक्सेस करने के लिए for specific use cases you need to make very targeted applications. So full stack development, application development become very core fields. Although they've been there for a while, they will continue to be there for the next 20 years at least. Anybody trained on full stack development, application development can be starting somewhere around 8.5-9 lakh rupees. And again, depending on the capability, the growth is around 30-35% year on year. UI UX becomes a very important field which students or young people can take up. क्योंकि जितनी ज़्यादा applications हैं, उतना ज़्यादा competition है. आप कौन सी application ज़्यादा use करोगे will depend कि आपका experience कौन सी application पे better रहा है. Right? And you have applications for everything. आपको खाना खाने बाहर जाना है उसकी एप्लीकेशन है, खाना घर मंगाना है उसकी एप्लीकेशन है, सामान मंगा के घर पे खाना मंगाना है उसकी एप्लीकेशन है, मूवी बाहर देखने के लिए टिकट बुक करनी है, यू हैव अ डिफरेंट एप्लीकेशन, घर पे देखनी है उसके लिए एक एप्लीकेशन, यू डोंट नो किसके साथ जाऊंगा मूवी देखने, उसको ढूंढने के लिए एप्लीकेशन है, यू कांट डू दैट, यू वांट योर पेरेंट्स टू डू दैट फॉर यू, उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, एंड देयर आर मेनी ऑफ ईच सेट. So again, user experience will play a very important role as to which of these organizations, which of these applications become profitable in nature. UI UX के लिए आपको बहुत ज़्यादा technical background की ज़रूरत भी नहीं होती. So people from let's say non-tech backgrounds can also take it up. And you start at around 8 lakh rupees, a well-trained person, and training takes about 4 to 6 months. Digital marketing again becomes a very critical tool in this new age world of social media. I think you'll know way better than I do on this subject. Again, a good performance marketing trained professional can start at around 8.5 lakh rupees in this market. And again, sky's the limit. You can also have people trained on blockchain. It's not caught up that well till now, specifically in this part of the world, but I see some potential, some good potential in the next 5 years for people trained on blockchain as well. I think financial organizations will have a large use case for them, even for niche art, and ensuring that you have NFTs, created for very, I would say, savored art and music. So blockchain again could be another field where again, if you're trained well, you start around 11.5 lakh rupees.
So those could be some technologies that younger people can take up, can put their interest in, can put their time and effort. अब मैं कौन सा क्वेश्चन दूँ? I wanted to also touch upon जो लोग already job में जा चुके हैं but they are doing those 4-5 lakh वाला jobs. ठीक है, understood. So कुछ मेरा एक friend है, he did his engineering, 11th-12th में science लिखा engineering किया. Right. Now he is one of the students जो eventually उस वाली job में आ गए जहाँ पे आपकी salary 4-5 लाख तक limit हो जाती है. Right. And they feel कि यार बाकी सारे लोग इतना अच्छा कर रहे हैं. Even the big fours are now paying much more than that. Right. And they feel they're stuck. तो उनके लिए do you have a similar advice या जो लोग उस चीज में आ चुके हैं अब वो उससे निकलने के लिए नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए क्या कर सकते हैं? So I tell you, generally जो लोग 4-5-6 लाख के ब्रैकेट में फंस जाते हैं even after 3-4 years of experience, वो दो तरह के होते हैं. One of the kind is somebody who's stuck in a legacy technology. उस टेक्नोलॉजी में फंसे हुए हैं जिसके नए प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे और सारे वही प्रोजेक्ट्स हैं जो मेंटेनेंस में चल रहे हैं. You know, mainframes, Siebel, COBOL, the older age technologies that you had. The second category of people, जिसके अंदर I think India में 1/4 of IT engineers are there, is software testing. You know, which again in the foreseeable future will be completely automated. जो मेरा सजेशन रहेगा इन दोनों कैटेगरीज के साथ is that अगर तो आप टेस्टिंग में हो, full stack development comes as a natural progression field. कि आप एक पार्ट कर रहे थे उस 3-step प्रोसेस का, अब आप उसके तीनों पार्ट अगर सीख लीजिए and you know what works and what doesn't work. For legacy technology trained people, all of these is a open buffet. They can get trained in machine learning, they can get trained in AI. Data science and data analytics again becomes a very important field if your mathematics is good. So these are some of the technologies that they can take up. If they were working with larger organization managing a huge amount of data, even cybersecurity and cloud computing would be very good options that they can choose. And Kushal, you have mentioned a lot about a lot of fields, a lot of technologies, their salaries and everything. But is all this learning limited to a certain section of society? या you feel कि यार आज मैं एक किसी भी शहर में बैठा हूँ इंडिया के अंदर और वहाँ से भी मैं सीख सकता हूँ without any language barrier या किसी भी sort of barrier के अलावा? So yes, that is one of the most important problem statements जो हम GUVI में solve भी करना चाह रहे हैं. Great. मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, जो हमारा एक नेशनल विजन भी है 2047 का, एक्सेस टू लर्निंग ना किसी भी पैरामीटर से लिमिट नहीं हो सकता. It can't be limited by financial factors, it can't be limited by language factors, it can't be limited by demographic or regional factors. So हमें ये ensure करना पड़ेगा कि हर nook and corner पे if there is a curiosity to learn, the access to learning is there and good quality learning is there. जैसे GUVI में जब हमने initially start किया, we realized कि बच्चे टेक्नोलॉजी सीखना चाह रहे हैं but अंग्रेजी उनके लिए एक bottleneck बन जा रहा है क्योंकि most of the courses that you see are completely in English. जबकि आपने जब स्कूल में पढ़ाई करी होगी, कॉलेज में पढ़ाई करी होगी, तो केवल टर्म्स इंग्लिश में रहती थी. टीचर आपको बाकी सारी चीजें आपकी नेटिव लैंग्वेज में सिखाते थे. You know, it will be x square plus y square. क्या हुआ बच्चों? That's how you learn. Now suddenly, if you want to learn AI completely in English, you will be lost. At GUVI, we offer our courses in 13 regional languages. So it's Telugu, Tamil, Malayalam, Hindi, Marathi, Telugu, Gujarati, Bengali, and a couple of foreign languages also. The idea is कि बच्चा किधर से भी आए, उसकी कितनी भी फ्लुएंसी हो इंग्लिश के अंदर, वो टेक्नोलॉजी और टेक बेस्ड एजुकेशन सीख पाए. Another thing that we do is that without taking names, most of our competitors ने सारे courses जो जिनकी हम बात कर रहे हैं वो around 2 lakhs and upwards priced होते हैं. And आपके I think 1/3 है. हमारे almost 1/3 है. So our course is around 70,000-75,000 rupees with a similar learning outcome, if not better. हमारे सारे courses in fact completely synchronous, completely live भी हैं. So we don't pay too much emphasis on learning in a self-paced manner. We want to take accountability for somebody's learning, and we don't want price to be a factor जो learning को inhibit करे. So yeah, that's a couple of things that we are very proud of at GUVI.
And Kushal, you also talked about a lot of different fields. Right. Now let's say I'm a student. Right. अब मैंने कहा ठीक है, this is the new age, this is the time that I have to adapt. Right. ये सारी फील्ड है, अपकमिंग फील्ड्स आने वाले 15-20 साल तक रहेंगी. Right. अब मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि यार मुझे फुल स्टैक में जाना है या मुझे इस चीज में जाना है? हाउ डू आई डिसाइड दैट? So generally जब हम किसी को बोलते हैं ना कि आप कैसे डिसाइड करो कि what should be the best thing for you, so it's essentially a intersection of three things. What interests you, आपका इंटरेस्ट किस चीज में, आपकी कोर पर्सनैलिटी किस तरीके की है, what is it that you can get paid for, and what is it that the market is going to demand in the next 20 years. Market क्या डिमांड करेगी next 20 years में कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, and most of those things are also what you might get paid for. तो अगर इस सेट में से आपने चूज करना है तो आपका इंटरेस्ट और आपकी कोर पर्सनैलिटी किस डायरेक्शन में है will play a major role. If you're somebody who's very analytical, somebody who's very logical and takes very data driven decisions, क्या मैंने इतने बजे यहाँ जाना है तो मैं कैसे करूँगा, should I take the bus, मेरे पास इतने पैसे हैं मैं उसे कैसे खर्च करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, if that's the kind of person you are, data analytics, data science and eventually machine learning and AI could be very good options for you. If you're somebody जिसको बहुत अच्छी चीजें बनाने का शौक है, बहुत सुंदर चीजें बनाने का शौक है, बहुत फंक्शनल तरीके से कि मतलब अगर हम सेट हो रहे हैं, अपना टेबल सेट कर रहे हैं तो मेरी कौन सी चीज कहाँ पड़ी हो, मैं घर में अगर मेरे को किसी का रूम सेट करना है तो वो मुझे बता दे. That's the kind of personality you have. User experience and user interface could be very good fields for you, and eventually the natural progression is towards full stack development. So you can devise very good applications for you. If you're somebody who likes something very structured in a very methodical manner, कि यार पहले एक स्टेप हो, फिर दूसरा स्टेप हो, फिर तीसरा स्टेप हो, I am that kind of a personality. Cloud computing and backend server management could be very good fields for you. Also, what we do at GUVI is actually understand कि हर बच्चे को शायद नहीं पता होगा लर्न करने से पहले कि वो किस फील्ड में जा रहा है और वो फंस ना जाए is a core tenet that we go about by. Anybody who does any of the courses at GUVI has to mandatorily go through something that we call as a pre-boot camp. What is a pre-boot camp? Okay, so pre-boot camp की thought process यही है कि somebody before joining the main course should be extremely sure कि वो क्या करना चाहता है, वो उस फील्ड के लिए right candidate है या नहीं है, and we should be very sure कि वो इंसान जो भी ये कोर्स कर रहा है वो अपनी तरफ से इंटेग्रिटी और डेडिकेशन लेके आ रहा है, because we are accountable for that person's learning. प्री बूट कैंप एक 4 दिन का प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपके 2 सेशंस ऑफ लर्निंग होते हैं for 75 minutes in the technology that you are about to learn, which gives you an access to understand कि यार मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, उसमें क्या होता है, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, मैं उसको समझ लूँ. It's like a try ball like you have in cricket. Second thing it does is that it also evaluates you on your technical standing at that point of time, so you have a technical assessment, and then you have an HR assessment to understand what kind of personality traits you have and if they'll be the right fit for the kind of technology you're going ahead. And then there's a feedback session where a counselor sits with you, tries and have an understanding as to what would be the right decision for you and helps you navigate through that decision. After the pre-boot session, you can choose to either go ahead for the main course or not go ahead for the main course. It could also be that we don't admit you to the main course, saying that we don't feel that you are right now in that place in life where you would be able to do justice. We've always thought that this should be free. The pre-boot camp should not cost any money. But what we've seen is that students or young people come in and then don't go through this 4-day process nicely. So as of today, the pre-boot camps, we charge 999. So we've always felt कि pre-boot camp का कोई cost नहीं होना चाहिए बच्चे. ठीक बात. But what we've also felt is that अगर वो outrightly free हो तो बहुत सारे लोग उसे ज्वाइन कर लेते हैं, पर उस 4 दिन के प्रोसेस में ही जस्टिस नहीं करते, which becomes a very big burden for us. Seriousness नहीं आती. And we want it to be done in a time bound manner. वो 4 दिन में से खत्म कर लो, चारों प्रोसेस कर लो अपने, then you can take your time. But so now what we do is that we charge 999 rupees, which is 1000 rupees essentially for a pre-boot camp, जो refundable है. ठीक है. लेकिन बच्चे को एक बार वो देने पड़ेंगे और 4 दिन का वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. उसके बाद if we feel कि बच्चा आगे नहीं जा सकता, is not the right fit, or the
learner feels कि यार I don't feel that I will be able to do justice in this particular technology at this point of time, we refund that money back within 5 working days. Also, if somebody chooses to go ahead कि हाँ okay fine मेरे को समझ आ गया, this is what I wanted, I want to go ahead and learn this, that 1,000 rupees get adjusted in the fees. Okay. Yeah. And also in order to pay that fees also, as I mentioned, the idea is कि पैसा restriction नहीं होना चाहिए. We offer multiple ways. There are EMIs that the student can take, the learner can take. The learner can also opt for partial payments. So there are multiple ways, and we try our level best that money or language or demographics is not something जो एक बच्चे की learning में hindrance. Which is so important. Yes, which is I think the most critical part to become a developed country from a developing country. And in fact, मेरी जो audience है, that is between that age group, इसके लिए lovely. बहुत relevant है. Lovely. And I think when you told me about this pre-boot camp वाली चीज, Right. बहुत ही कम लोग market के अंदर इसको करते I हैं. think we're the only one. And that too with a refundable fee, so that it's Yes. all for their benefit. Yes. I'll definitely put the link of this thing Sure. in the description. And you know, I would love अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस pre-boot camp को करें, आप सीखो कि कौन सी technology, you know, जिस technology को आप करना चाहते हो उसमें actually होता क्या है. You know, a lot of times people come in and say कि मुझे data science पढ़ना है, but data science में इतना maths होता है कि लोग बोलते हैं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. So it's very important कि आप वो 4 दिन का process करो, so that at least clarity हो जाएगी कि ये करना भी है या नहीं करना. Which is the most important. Most important. Plus, I think if they have any questions, I'll tell them to put it in the comments. कुछ भी questions है आपके Definitely. with respect to anything around this field, आप सब comments में डालना, and we'll definitely try to answer the maximum number of questions. And thanks a lot, Kushal, for answering My all these pleasure. things. My Because ये ना एक ऐसा issue है जो बढ़ता ही चला जा रहा है, and the Right. things are moving so rapidly कि लोग समझ भी नहीं पाते इतने कम टाइम में करना क्या है. Thank you. So I think this would have answered a lot of queries. Thank you so And much. thanks a lot for letting us know about the pre-boot camp, which is I think one of the most important things for My all. pleasure, and thank you so much for giving us the platform to come in and speak to a large audience. Thanks a lot, Kushal. Thanks a lot.